अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं मैं वो एक्चुअली एक डायग्राम है, एक कर्व है और उसका नाम है लेफर कर्व। एक्चुअली ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, उनका पूरा नाम था आर्थर बैड्स लेफर। बल्कि था, मैंने गलत कहा क्योंकि ये माशाल्लाह आज तक हयात हैं। 1940 में ये पैदा हुए थे और अब ये 85 ईयर्स के हैं और माशाल्लाह मौजूद हैं। बहरहाल, लेफर कर्व के नाम से इनका एक कॉन्सेप्ट बहुत मशहूर है जिसमें इन्होंने टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यूज के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्कस किया है। इन्होंने डिस्कस किया है कि टैक्स रेट बढ़ने या कम होने से टैक्स रेवेन्यू पर क्या इम्पैक्ट आएगा और उसकी क्या प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। तो चलें बात करते हैं लेफर कर्व पर। डायरेक्टली मैं आपके सामने डायग्राम रखता हूं। जी जनाब, ये आपके सामने जो डायग्राम नजर आ रही है ये कहलाता है लेफर कर्व। आपके सामने है डायग्राम, आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे मैंने रखा है टैक्स रेवेन्यू एंड ऑन द एक्स एक्सिस आई हैव mentioned tax rate, which means that I'm showing that what is the relationship between the tax rate and the tax revenue. टैक्स रेवेन्यू से क्या मुराद है? गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं। और टैक्स रेट से क्या मुराद है कि गवर्नमेंट कितने परसेंट टैक्सेस इनकम पर लगा रही है। तो यहां हम डिस्कस कर रहे हैं टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के दरमियान कनेक्शन। आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, ये पहले अपवर्ड स्लोपिंग है और फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जीरो से ये स्टार्ट हो रहा है और फिर लाइन अपवर्ड स्लोपिंग नजर आ रही है आपको, और फिर बाद में लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग नजर आ रही है और इसका एक्स इंटरसेप्ट मौजूद है पॉइंट आई पर। राइट, इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट आपको पॉइंट आई पर नजर आ रहा है और ये लाइन जीरो से शुरू हो रही है, origin से शुरू हो रही है। Tax revenue on the y-axis, tax rate on the x-axis. So this line initially you can see is showing that when the tax rate is increasing on the x-axis from 10% to 15% to 20% to 30%, when the tax rate is increasing initially, tax revenue is also increasing. When the tax rate was 10%, then the tax revenue was $10 billion, let's suppose. But when the tax rate was increased to 15%, the tax revenue went to 20 billion. Then 20% tax is leading to 30 billion tax revenue. And then ultimately, a 30% tax imposed on direct on incomes is giving a revenue of 40 billion. So initially, from point A to B to C to D to E, you can clearly see that when the tax rate is increasing, tax revenue of the government is increasing. So initially, you can see that there is a positive relationship between the tax rate and the tax revenue. But what is happening later on after point E, after when the tax rate is 30%, when the tax rate is further increased to 40%, then you can see that the relationship has been converted into inverse relationship. Initially, there was a positive relationship between the tax rate and the tax revenue. You can see that there is an upward sloping line, right? That when the tax rate was increasing, tax revenue was increasing. But after 30%, when the government is increasing tax rate to 40%, then tax revenue is falling from 40 billion to 30 billion, which means the curve is moving from point E to F, where the tax rate is 40%, but the tax revenue is lesser than before, 30 billion. And if the government is further increasing the tax rate from 40 to 65% at point G, you can see that tax revenue is further falling from 30 billion to 20 billion. Then if the government is taking tax rate to 80%, tax revenue at point H, you can see that tax revenue
is falling to $10 billion from $20 billion. And if the government will impose 100% tax, right? This would mean that obviously why would people work then? And the tax revenue would become zero. So this curve is showing initially a positive relationship between the tax rate and the tax revenue. But after 30% of the tax, when the tax rate is further being increased, tax revenue is continuously falling. At 100% tax, tax revenue is zero. At 0% tax, tax revenue is zero, right? So government has the option to initially increase the tax rate, right? And then tax revenue would increase. But beyond a certain point, when the tax rate would be further increased, tax revenue is falling. According to Laffer, the point where the tax rate where the tax revenue is maximum, that is called the optimum tax rate. Because 30% here, you can see in this diagram that 30% tax is resulting in 40 billion tax revenues, but beyond that it is falling. So 30% is the optimum tax rate. It is the best tax rate because the tax revenues are continuously increasing till this rate. But if the government will increase tax rate beyond that, you can see that tax revenue is falling. Why is that? Actually, let me add one thing more. That's why the Laffer suggested that tax rates should be lower. When the tax rates would increase, when they are lower, they will increase the tax revenue. But after a certain point, when tax rates would be further increased, tax revenues would start to fall. That's why government should find out the optimum tax rate. So what is happening? Why an increase in tax revenues, why an increase in taxes is resulting in a fall in tax revenues? तो बात बड़ी आसान है. First of all, disincentive effect for work, investment and production. Obviously, when people, when firms would realize that any additional income earned would go more to the government and less to us, obviously they would be discouraged. अगर आपको ये पता चले कि अब जो आप एडिशनल इनकम कमाएंगे उसका ज्यादा हिस्सा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा एज अ टैक्स और आपको उसका इतना पार्ट नहीं मिलेगा, तो डिसइंसेंटिव क्रिएट होगा. आप काम से या इन्वेस्टमेंट से या प्रोडक्शन से डिस्करेज हो जाएंगे. और जाहिर बात है कि जब काम कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, तो जाहिर बात है कि नेशनल इनकम फॉल होगी. और जब नेशनल इनकम फॉल होगी तो टैक्स रेवेन्यूज फॉल होंगे. दूसरी लॉजिक ये है कि टू मच टैक्सेस विल डैम्पन एग्रीगेट डिमांड. बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाने से एग्रीगेट डिमांड कम होनी शुरू हो जाएगी. एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो जाहिर बात है कि प्रोडक्शन कम होगी, नेशनल इनकम कम होगी, और नेशनल इनकम कम होगी तो खुद ब खुद टैक्स रेवेन्यूज कम होना शुरू हो जाएंगे. और तीसरी बात यह कि जब आप बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाना शुरू कर देंगे तो टैक्स इवेजन शुरू हो जाएगी, टैक्स अवॉइडेंस शुरू हो जाएगी. टैक्स इवेजन का मतलब है टैक्स चोरी करना. टैक्स अवॉइडेंस का मतलब यह है कि आप कोशिश करेंगे कि आप टैक्स ना दें. तो इन तीन रीजंस की वजह से हम ये बात करते हैं कि अगर टैक्स रेट को एक सर्टेन लेवल से बियॉन्ड बढ़ाया जाएगा तो उसका उल्टा इफेक्ट आएगा कि टैक्स रेवेन्यूज फॉल होने शुरू हो जाएंगे. इसलिए लेफर का मानना यह है कि टैक्स रेवेन्यू के लिए ये तलाश करना जरूरी है कि ऑप्टिमम टैक्स रेट क्या है, और वो ऑप्टिमम टैक्स रेट चार्ट किया जाएगा तो टैक्स रेवेन्यूज मैक्सिमम होंगे. अगर टैक्स रेट उससे कम है तो टैक्स रेट को बढ़ाना जरूरी है, और अगर टैक्स रेट से ऑप्टिमम से आगे आ गए आप तो टैक्स रेट को वापस कम करना जरूरी है. अदरवाइज अब अगर आप टैक्सेस बढ़ाते चले जाएंगे तो टैक्स रेवेन्यू कम होता चला जाएगा. तो ये सारी बात लेफर ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में समझाई, राइट. लेकिन बात सारी ये है कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स में हम लेफर कर्व को इतना वैलिड नहीं मानते, क्योंकि एक्चुअली ये तलाश करना कि ऑप्टिमम टैक्स रेट क्या है ये इतना सिंपल नहीं है. डिफरेंट इकोनॉमीज के डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं, डिफरेंट इकोनॉमीज के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं. कहीं एग्रीकल्चरल सेक्टर ज्यादा है तो टैक्स बेस कम है,
कहीं टर्शरी सेक्टर ज्यादा है तो टैक्स बेस बड़ा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इस चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं कि ऑप्टिमम टैक्स रेट क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसको रियल लाइफ में तलाश करना कि ऑप्टिमम टैक्स रेट क्या है, वो इतना क्लियर नहीं है, इतना आसान नहीं है। आई होप कि ये सारी बातें आपकी समझ में आई होंगी। नई से नई वीडियोस, नए से नए टॉपिक्स पर मैं बनाता चला जा रहा हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि इल्म जितना बांटा जाता है उतना बढ़ता है। इल्म एक लाजवाल दौलत है, आपको पता है, राइट? और रिवीजन करते रहिए, वीडियोस को बार बार देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।